Hey all, this is my new channel about the question and answers of Standard 5th, EVS 1, that is Science, but our Standard 5th standard. So, we are going to study about or learn today about the question and answers of Lesson 1 from the Standard 5th, Science, and our Lesson 1 name is Our Earth and Solar System. So, already you all might have learned the lesson from the textbooks lesson explanation. So we are going to only study about the exercise and the solution in this video. So first question among our first lesson is about what's the solution. So what's the solution? One by one we'll solve the question, and also we are going to see the answers of that question. So let's start. The first question is, what's the solution? One of the asteroids has fallen out of its place and in the asteroid belt and is hurtling towards the sun. Our earth is in its way and there is all likelihood of a collision. What can be done to prevent this collision? So this is the question and we have to give the solution for this question. So here is the solution for the question is, the first act is to save the earth and it can be done by attacking the asteroid with the help of missile. A missile can break an asteroid into smaller pieces. So the second way is to change the path of an advancing asteroid. See, here you can write that first answer only. It can also work as the first act is to save the earth and can be attacking the asteroid with the help of missile. A missile can be broken an asteroid into smaller pieces. इतना लिखोगे तो भी आंसर चलेगा, बट हम आगे डिटेल में और भी वो बता सकते हैं इस आंसर में. So the second way is to change the path of an advancing asteroid. For changing the path of the asteroid, spaceships or missile can be used to push the asteroid aside. Space shuttle fitted with mirrors can be used so that the reflected sun rays from such mirror can be bombarded on the asteroid. So even rays को भी हम use करके उसको क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं. So this will create the pressure on the asteroid and its advancing path can be changed. By use of laser rays, the surface of asteroid can be subjected to evaporation. This will create change in the mass of asteroid. We can also send extra material on the asteroid from the earth. Such change in the mass of asteroid changes the orbit and the path of the asteroid. And also by completing this, we have to complete as by placing a space shuttle in the vicinity of this asteroid, the gravitational force could be created. This can also change the speed and path of the asteroid. Astronomy and astrophysics are so much advanced now that even if such a threat exists in future, we can easily protect our earth inhabitants well in advance. See, missile यूज़ करके हम उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़कर और मिरर्स वगैरह स्पेस शटल में यूज़ करके हम उसके रेस को उसके तरफ ही रिफ्लेक्ट करके भी उसको और आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रेशर में उसको तोड़ सकते हैं और उसका रास्ता भी चेंज कर सकते हैं. और आगे ऐसे चांसेस आए तो भी अपना जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स इतना एडवांस्ड हो गया है कि हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में उससे हम लड़ सकते हैं. So hope all you have understood this, what the solution question. Next we are going to solve the next question, that is use your brain power. And use your brain power में पहला क्वेश्चन क्या है, what will happen to our solar system if the sun were to suddenly disappear. अगर अपने पृथ्वी से अचानक सन गायब हो जाए तो क्या करना, क्या होगा. So the answer will be, there will be darkness everywhere. All the planets will die as they will not be able to perform photosynthesis. See, हमें plants बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब फेड होते हैं प्लांट से. अगर सब तरफ डार्कनेस हो जाएगी तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. विदाउट सन इवन हम भी नहीं रह पाएंगे.
So अगला, all the planets will stop revolving. The cycle of the day and night would not come to a halt. सब जो साइकिल जो चल रहा है, डे नाइट का साइकिल जो चल रहा है अपने पृथ्वी में, सभी प्लैनेट्स में, वो रुक जाएगी. हॉल्ट मीन्स रुक जाएगी. देयर विल नॉट बी वीक्स और मंथ्स एनी मोर. अगर दिन और रात चलना ही बंद हो जाएंगे तो वीक्स, हफ्ते महीने कैसे चलेंगे? सो वो भी रुक जाएगा. देयर विल बी यूनिफॉर्मली ओनली वन सीजन. सीजनल चेंजेस विल कम टू एन एंड. अब हफ्ते मंथ सब रुकेगा तो इवन क्या भी रुक जाएगा. जो यूनिफॉर्मली चेंजेस हो रहे सीजन्स का, वो भी रुक जाएगा. एंड ऑल द इक्विपमेंट विच वर्क ऑन सोलर एनर्जी विल नॉट वर्क एनी मोर. जो भी चीज़ें हम सोलर एनर्जी के थ्रू हम उसको वर्क कराते हैं, वो सारी चीज़ें, जो सारी इक्विपमेंट्स क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी. देयर विल नॉट बी एनी हीट एंड एंटायर अर्थ विल बी कोल्ड. पूरे पृथ्वी में जो गर्मी सन की वजह से मिल रहा है, बस वो भी बंद हो जाएगा. सब तरफ क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा ठंडी ठंडी रहेगी. द वाटर साइकिल वुड स्टॉप एज द वाटर बॉडीज विल नॉट एवापरेट, फॉर्मिंग वाटर वेपर एंड देन क्लाउड्स, एंड दस देयर विल नो बी रेन्स. क्या होगा, जो गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की वजह से पानी भाप होकर जाता है, उसकी वजह से फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड देन रेन होता है. जब पानी इवापरेट ही नहीं होगा सन की वजह से, सन नहीं होने की वजह से, तो ना ही क्लाउड्स फॉर्म होंगे और ना ही रेन होगा. सो बारिश होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. And germs would grow at a rapid pace everywhere on the earth, and this will result into an outbreak of many diseases. अगर सन नहीं, पानी नहीं, ना ही सब तरफ ठंडी ठंडी है, तो सब तरफ क्या हो जाएगा, जर्म्स बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती जाएंगी. एंड होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर, कि अगर सन गायब हो जाएगा तो सब तरफ अंधेरा हो जाएगा, सभी प्लांट्स मर जाएंगे, प्लांट्स नहीं तो हम नहीं है, दिन रात नहीं चलेगा, दिन रात नहीं चलेगी तो हफ्ते नहीं रहेंगे, महीने नहीं रहेंगे, अपना पूरा साल सिर्फ अंधेरे में जाएगा. और जो भी चीज़ें सन के थ्रू काम करती है वो सारे काम करना बंद कर देंगी, और सब तरफ ठंडी ठंडी रहेगा, वाटर साइकिल नहीं होगा, रेन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी. ये ही होगा अगर अपना सोलर सिस्टम में से सन अगर अचानक गायब हो जाए. So we'll study the next question, that is, suppose you want to give your address to a friend you have on a planet Mars. How will you write your address if you want them to understand exactly where you live? अगर तुम कहाँ पे हो, मार्स में हो, और अपने फ्रेंड को तुम अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताना चाहते हो, तो तुम्हें कैसे एड्रेस बताना है, वो ऐसा पूछा है. अपने ब्रेन पावर को यूज़ करके तुम्हें क्या करना है, अपने फ्रेंड को, जो तुम प्लैनेट मार्स में हो, अपना एड्रेस तुम्हें उसको बताना है. सो हियर इज द आंसर, एज Kumar या Kumari, whatever your name would be, you can write there your name as, my name is Kumari Nirmala. So Kumari Nirmala Prasad Gokhale Road, Dadar West, Mumbai, whatever the pin code might be, and then state of Maharashtra, India, continent of Asia, Earth, third planet, solar system, Milky Way. So you have to give this address to your friend who is living on the planet Mars. So next here the question is given as, in the picture below, correct the sequence of the planets from the sun. See, all you have to learn this sequence of the planets which are situated in our solar system. So here I am going to give you the answer, as in the above picture, Mars and the Earth position are interchanged. See, यहाँ पे मार्स और अर्थ का पोजीशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है. सिमिलर द सीक्वेंस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न इज ऑल्सो चेंज. जुपिटर और सैटर्न का पोजीशन भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है. सो देयरफॉर द रॉन्ग सीक्वेंस इन द पिक्चर इज मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्यून. The correct sequence should be Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So you have to write the answer as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So next is, who am I? So this is the easiest question, and you have to
नॉट टू जस्ट रटोफाई और मगअप करना है इसको, तुम्हें समझ के पढ़ोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे. सो ये ऐसी चीज़ है जो हम डेली देखते हैं अपनी अर्थ से, और जो लाइटेड पार्ट है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जाता है. तो हमें पृथ्वी से क्या दिखता है, एक तो सन दिखता है और एक मून दिखता है. तो वो उसका आंसर क्या रहेगा, मून रहेगा, क्योंकि मून ही क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है. मून ही बढ़ता है, घटता है. कभी फुल मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, कभी मून दिखता ही नहीं है. सो जो चेंज होता रहता है, सन जो है वो चेंज नहीं होता, मून मगर चेंज होता है. इसकी वजह से you can see me from the earth but the lighted part of me that you see changes every day. So the thing which changes every day is moon. The next question is I have my own light. It is only from me that the planets get light and heat. वो अपना क्या है, सन ही है जिससे हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, एंड एवरीथिंग, एवरी प्लैनेट गेट्स द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. Third one is I turn around myself, around a planet and also around a star. This is satellite जो हम पृथ्वी से भेजते हैं. सैटेलाइट जो क्या करती है, अपने खुद से भी क्या करती है, खुद को भी राउंड करती है, दूसरे प्लैनेट्स का भी चक्कर लगाती है और स्टार्स का भी चक्कर लगाती है. नेक्स्ट इज आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन. This is planet. No other planet has a living world like mine. कोई भी ऐसा planet नहीं जिसमें मेरे जितना living things है. वो क्या है, अपना पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा बाकी कोई जगह पे इतने लिविंग थिंग्स नहीं है. आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. नियरेस्ट स्टार अर्थ से क्या है, सन. सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. Next, we are going to study our last questions. Last two questions are pending now. The last question is, for what purpose are rockets used in the space travel? हम रॉकेट्स यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवल में. सो स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट इन आउटर स्पेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हम क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू आउटर स्पेस में ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट उसको भेजते हैं. एंड इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट विच इज़ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ इन वेट. स्पेस का जो है उसको स्पेस को बाहर भेजने के लिए हमें बहुत सारा क्या चाहिए रहता है, एनर्जी चाहिए रहता है उसको लॉन्च करने के लिए. तो हम स्पेस क्राफ्ट में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेट के हम क्या करते हैं, एनर्जी उसमें स्टोर करके हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च हम कर सकें. This energy is obtained through burning of ample quantity of fuel present in the rocket. जो भी फ्यूल्स हमने रॉकेट्स में स्टोर करके रखे हैं एम्पल अमाउंट में, उसको हम बर्न करने से हमें वो एनर्जी मिलता है, एंड वी कैन बी एबल टू launch the spacecraft in the space. So the rockets are used to launch the spacecraft in the space travel. Hope you all have understood this question. And the next question is, what information do man-made satellites provide? So the answer is, the man-made satellites provide useful information on agriculture. So with the help of satellites, we can see as which season is going to come and where it's going to rain. Everything we can get the knowledge from the satellites, and also about the environment, about weather forecasting. As see, nowadays you can get the advanced alarm about advanced alarm, or you can see breaking news about the cyclones or storms or anything which might be coming. You can get the update before it is going to happen. So it is only because of the satellites we are launched in the space. And also it is used for searching for water and minerals from the earth. So it is also used for searching the water and minerals from the earth. Such information can be used to make maps, and thus man-made satellites are also used for telecommunication. See, telecommunication means we use mobile phones, TVs, etc. things. Whatever things we use internet. These all things we can only
used with the help of satellites which are in the space. So they are also used for telecommunication. Hope you all have understood each and every questions. Please do share my video, subscribe my channel, and also like my videos. Hope you all have enjoyed my lecture, enjoyed this video, enjoyed this session. Thank you everyone.